Hello students, am I audible? Yes, sir. Okay. Evening, sir. Yes, sir. Good evening. How the things are going? Sir. Going fine. Okay. So we have started discussion on that grading, right? And we have also seen that grading is nothing but it can work as a slits, right? It can have n number of slits, and we have derived that expression for intensity due to n number of slits. Okay. So basically that is n slit diffraction. Okay. And then we have discussed various cases, right? If you remember, when that slit width tends to 0, okay, and number of slit is 2, then we observed that intensity distribution is exactly same as Young double slit experiment, right? And when it is having slit number 3 with slit width small, then we observed that intensity, that maximum intensity is how much? Basically, that is 991. And also when that slit width is basically small, then it will contain only intensity part, interference part, and diffraction part will be, there will be no contribution of diffraction part. Okay. So now today we'll see the position of primary maxima, primary or principal maxima. Okay. So similar to double slit diffraction, that primary maxima for n slit experiment will arise due to what? Due to the phenomena of interference. Due to the phenomena of interference. Okay. Now, if you remember, the intensity distribution for nth slit, that was how much? It is like, for n slit, it is like I naught, then you will have sine square beta, then beta square, and also you have sine square n delta by 2 divided by sine square delta by 2. So this is the intensity distribution on the screen due to n slit diffraction phenomena, right? And we have also discussed this part. This part is coming due to the phenomena of diffraction, and this part is coming due to the phenomena of interference. Okay. So since the principal maxima or primary maxima is coming due to what? Interference. So obviously I is getting maximum value because of what? Because of this terms, right? ठीक है ना? So primary maxima में क्या होगा? I will be maximum, and the cause of primary maxima is interference. And which term is representing interference? This term. So this term should be maximum. ये maximum कब होता है? When it will be maximum? So this term will be maximum when delta equals to twice n pi. When delta equals to twice n pi, where n can take 0, 1, 2, and so on. Okay. So this will be, I will be maximum when this delta will be 2n pi, and n can take all integer values. So I'll check actually how this when delta equals to 2n pi, why this I will be maximum. So we can check. How we'll check? So intensity, let us take limit. So intensity that I, when limit delta tends to twice n pi. Okay. So how much you'll get? This term will be as it is, that is I naught. Then you will have sine square beta by beta square. Okay. And you have sine square n delta by 2 divided by sine square delta by 2. Okay. So at this limit, I am calculating that intensity. Now, if we apply that L'Hospital rule, if I apply L'Hospital rule, okay, then
At this limit, this term will contribute how much? Anyone? कितना मिलेगा? This term sin square n delta by 2 divided by sin square delta by 2, that will give you at this limit, it will be n square. So this is your homework. Please do this homework. Okay. आपको ये प्रूव करनी है when delta tends to n pi, you will get that I, how much you will get? You will get n square I naught sin square beta by beta square. So you have to prove when delta tends to n pi, this term will give that value, that will be how much? N square. So I will be how much? So I will be basically n square I naught, then you will have sin square beta by beta square. ठीक है? Is this part clear what I'm saying? क्या इसमें डाउट है? देखो Yes, sir. डेल्टा टेन टू एन पाई है या एन पाई है? डेल्टा टेंस टू ट्वाइस n pi. ओके सर. हाँ Sir, यस n इक्वल टू 0 होगा सर, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कैसे सर? जैसे आपका साइन स्क्वायर 0 है ना, साइन स्क्वायर 0, ये 0/0 है ना. नहीं, लिमिट देखो आप, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, साइन स्क्वायर यहाँ पे देखो कितना आएगा आपका, कितना आएगा? सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, 0 रखकर जो 0/0 जो डेल्टा टेंस टू ट्वाइस n pi, राइट, एंड n कैन टेक 0 on 2. ओके ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? अगर डेल्टा सपोज मान लो 0 है तो फिर कितना आएगा आपका? डेल्टा 0 है फिर कितना आएगा? देखो डेल्टा अगर 0 है फिर यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? अच्छा, साइन स्क्वायर डेल्टा यहाँ पे अगर सपोज मान लो 0, तो साइन स्क्वायर 0 बाय साइन स्क्वायर 0, आई मीन सपोज यू आर कैलकुलेटिंग दिस, सपोज आपको ये कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू व्हेन डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा टेंस टू 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा उस टाइम कैन यू प्लीज टेल मी? जब आपका सपोज मान लो डेल्टा टेंस टू 0 है तो ये टर्म कितना आ जाएगा? 0 सर. नहीं, 0 कैसे आएगा? 0 साइंस का व्हेन डेल्टा टेंस टू 0, आई एम सेइंग व्हेन डेल्टा टेंस टू 0, देन व्हेन डेल्टा टेंस टू 0 sin स्क्वायर n इनटू, यहाँ पे क्या रखोगे? 0 रखोगे, राइट. दिस टर्म विल बी हाउ मच? ये टर्म कितना आ जाएगा आपका? sin स्क्वायर इनटू 0 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 0. तो ये कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है, चेक करो. तो आपका ये नहीं है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है लिमिट, डायरेक्ट sin स्क्वायर 0/0 ऐसे नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है. आपको क्या करनी है? लिमिट लेनी है. आपको लिमिट लेना है, फिर आपको क्या लगाना है? यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है. अब इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ओके, और चेक करो whether when delta tends to 0 whether you are getting this kind of thing or not. I think you will get, आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? twice sin n delta by 2 cosine n delta by 2, this kind of thing you will get. So that on delta by 2 will be cancelled from this. ओके, कोसाइन टर्म जो है वो कंटेन करेगा. आप एक बार चेक करो, है ना, चेक करो आप, आपका होमवर्क है ये कि फॉर ऑल दिस वैल्यूज वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट, n स्क्वायर आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, एक बार चेक करो, है ना. who asked this question? I'm asking who asked this question, can you please tell me? Am I audible? Yes sir. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार चेक करो, है ना, whether you are getting this or not for delta equals to 0 also. I think you will get this. Okay, I'll check and I'll tell you. I think this is correct. Now, how much you got this intensity for n slit? Okay, when delta equals to 0 to pi, 4 pi, and so on, you will get I equals to how much? कितना ही आ रहा है सर? Huh? कितना ही आ रहा है? Exactly. Very good. So you will get this. Okay, n square I naught, then you will have sin square beta by beta square. Okay. Now, if
for this case, if beta tends to 0, if beta tends to 0, then what will happen? Na? When delta tends to twice n pi as well as beta tends to 0, then this term will be how much? ये कितना हो जाएगा? This term will be on, right? Because we know limit beta tends to 0 sin beta by beta कितना होते हैं भाई? बोलो कितना होते हैं? On होते हैं, right? So when delta tends to twice n pi as well as beta tends to 0, at beta tends to 0, this term will be how much? It will be 1, right? So basically you will get intensity, that will be how much? That will be n square I naught. That will be n square I naught. Okay. कितना क्लियर है? Yes, sir. Rajkumar, I think you gave one question yesterday, right? Did you check that answer? What was that answer? Yes sir. What was that answer? It was downshift by d by 4. Is this like that? Yes sir, समझ में नहीं आया सर कैसे वो. अच्छा डी बाई 4 कैसे समझ में नहीं आया आप लोगों को? आंसर क्या है? डी बाई 4 ही है ना, डाउनवर्ड. Yes sir, downward है. ओके ओके, लेट मी डू. शैल आई डू? ऑल पीपल आर एग्री? क्या हम कर सकते हैं उसको? Yes, sir. So what he has given this question. I told you, na Rajkumar, you didn't ask me. I told you that I am writing, I am busy with some other work. You please remind me if you are getting doubt still. Okay, anyway, I am doing it. Okay, if you have doubt, you can ask me again. Suppose आपके पास एक young सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, इसका स्लिट विड्थ क्या है? डी है, ठीक है. ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन कहाँ होगा बताओ? कहाँ पे होगा? सपोज मान लो आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इसका स्लिट का विड्थ अगर डी है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ लोकेट करेगा? इट विल बी एग्जैक्टली एट वेयर? डी बाई 2 पे लोकेट करेगा. नहीं, यहाँ से कितना दूरी पे लोकेट करेगा? सेंटर पे तो लोकेट करेगा ना. इट विल बी लोकेटेड एट डी बाई 2. Am I correct, राजकुमार? Yes sir. अगर आपके पास सपोज मान लो एक सिंगल स्लिट है, उसका विड्थ कितना है? डी है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे लाई करते हैं? इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ऑन द स्क्रीन दैट विल बी एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द स्लिट. ये जो पॉइंट होगा कहाँ पे लाई करेगा? इट विल बी एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ स्लिट. सो द लोकेशन विल बी वेयर? इट विल बी एट डी बाई. ठीक है. अब सेकंड केस में आपने क्या कर दिया बताओ? सेकंड केस में आपने किए हो कि भाई आपका ऊपर का जो आधा पोर्शन है उसको क्या कर दिया आपने? ओपेक कर दिया. नहीं मतलब कवर कर दिया, राइट? ऊपर का पोर्शन को आपने क्या कर दिया? कवर कर दिया, है ना? ठीक है. अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं. ये जो पोजीशन है स्क्रीन पे, कैन आई राइट इफ दिस पॉइंट, सपोज ये जो लोअर वाला आपका स्लिट का एज है उसका कोऑर्डिनेट आप मानो, सपोज आपका कोऑर्डिनेट मानते हैं हम x इंटू 0, ठीक है. ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? और बेटर हम इस कोऑर्डिनेट को मानते हैं. इसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लो आपका x इंटू एक्स डिवाइड 2, ठीक है. अब मैंने क्या किया? आधा पोर्शन को मैंने कवर कर दिया, ठीक है ना. अब स्लिट का विड्थ कितना है? आप डिवाइड 2. तो इसका सेंट्रल कहाँ पे, सेंट्रल जो मैक्सिमा है कहाँ पे लाई करेगा? डी बाई 4, है ना. तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? 0 x डी बाई 4 लिखेंगे. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो ये वाला ऊपर है या ये वाला ऊपर है? ऑब्वियसली डी बाई 2 मतलब अपवर्ड से. तो शिफ्ट कितना किधर हुआ है आपका? डाउनवर्ड्स की, है ना, क्योंकि ऊपर कितना था आपका? पहले ऊपर का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट क्या है? डी बाई 2 है. अब इसमें y का कोऑर्डिनेट किधर है? कितना है? डी बाई 4 है. मैंने इस वाला ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट लिया हूँ क्या लिया हूँ? y लिया हूँ. तो यहाँ पे आपका डी बाई 2 है, डी बाई 4. तो ऑब्वियसली क्या हुआ है आपका? डाउन शिफ्ट हुआ है. और कितना अमाउंट शिफ्ट हुआ है? दैट इज डी बाई 2 माइनस डी बाई 4. सो दैट इज डी बाई, ठीक है ना.
क्या क्लियर है? Yes, sir. आधा पोर्शन आपने कवर कर दिया है, तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा जो है लोकेट करेगा एट dy4. ठीक है, अर्लियर इट वाज dy2, so from dy2 to dy4 obviously there is a downward shift. How much? That will be dy2 minus dy4, exactly that will be dy4. So answer will be downward shift towards downward shift by the amount of how much? dy4. Okay, okay. So now if you remember that for primary maxima हमको कंडीशन क्या मिला है? बताओ, आप लोग बताओ, अंजू बताओ कितना मिले? That is 2i sin pi, right? Just we have Yes. done. Okay, what is actually delta? Delta कितना है? If you remember, the expression for delta was 2 pi by lambda d sin theta, right? Karthik बताओ, that will be how much? 2i sin pi, है ना? This 2 pi will be cancelled with this 2 into 2 and pi. So basically you will get d sin theta, that will be how much? That will be your n lambda. So this is the condition for what? Principal maxima. This is the condition for principal or primary maxima. Okay, where n can take value, n equals to 0. N equals to 0 corresponds to what? Ramon, batao. N equals to 0, that represent what? Basically central bright. N equals to 0 क्या होता है? Central bright. N equals to 1, that corresponds to first order. That corresponds to first order maxima. ठीक है, n equals to 2. कार्तिक बताओ, शेखर, ये क्या हो जाएगा? n equals to 2, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा. n equals to 3, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. ठीक है, so theta basically क्या होता है? Theta is basically very small. This theta is basically what? Theta is very small, so in place of sin theta I can write theta. For diffraction, theta is very small. In place of theta I can write sin theta. So I can write that angular position of nth bright fringe, angular position of nth bright or principal maxima, that will be how much? N lambda by d. And you can write like 0 plus minus lambda by d plus minus 2 lambda by d and so on. So angular position between two, angular separation between two consecutive primary maxima, it will be how much? Angular separation between two consecutive primary maxima, how much it will be? How much? Anju, Rajkumar? N lambda by d. कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एंगुलर सेपरेशन मतलब क्या है? बेसिकली डेल्टा थीटा यू हैव टू कैलकुलेट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का मतलब क्या है? थीटा n plus 1 b माइनस थीटा n b. कितना हो जाएगा बताओ? सो दिस थीटा n plus 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? n plus 1 lambda by d. N lambda by d. So it should be how much? It will be lambda by d. So angular separation between two consecutive primary maxima will be lambda by d. Is this part clear to all? Okay. Okay. So based on primary maxima, let us solve one problem. And recently asked in your exam, JAM exam. So okay. Suppose a laser light having wavelength of 680 nanometer, having wavelength of 680 nanometer, falls normally on a grating. Suppose a laser light having wavelength of 680 nanometer falls normally on a grating.
and this grating having number of lines 4000 पर सेंटीमीटर. इसमें कितना लाइन्स है? 4000 per centimeter. Okay, and also they have given that when that they observe that diffraction pattern, basically that okay, so you have to calculate that diffraction angle for third order maxima. You have to calculate the diffraction pattern for third order maxima. So the problem is very simple. In that recently asked in JAM exam, so it's very simple. So they have used laser source having wavelength 680 nanometer. That light is basically falls normally on a grating. Okay, and that grating have number of lines, that is 4000 per centimeter. Number of lines 4000 per centimeter. So you have to calculate that diffraction angle for third order maxima. Diffraction angle for third order maxima. So ये जो पैरामीटर गिवन है ये एक्चुअली है क्या? नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर. ये आपका है बेसिकली ग्रेटिंग एलिमेंट. जो नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर होते हैं दैट इज बेसिकली व्हाट? ग्रेटिंग एलिमेंट. सो ग्रेटिंग एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में. एनपी दैट इज हाउ मच? एनपी कितना होता है बेसिकली? 1 upon d. So that is given how much? 4000 per centimeter. ठीक है ना? तो यहाँ से d आ जाएगा आपको. d कितना आ जाएगा? d कितना आ जाएगा? That will be 1 by 4000 centimeter. So it will be 10 की power minus 2 divided by 4000 meter. Okay. So what do you have to calculate? Angular position of or diffraction angle for third order maxima. Maxima का condition क्या है? d sin theta equals to n lambda. This is the condition for maxima or maximum intensity in grating. This is the condition for maximum intensity in grating, right? Grating diffraction. So for third order maxima, what will be the value of n? कितना हो जाएगा भाई बताओ? For third order n should be 3. Just हम लोगों ने discuss किए थे, right? Okay. So now we got this value of n. They have given the value of lambda. We have calculated d. Just I'll substitute that values. So d is how much basically? 10 की power minus 2 divided by 4000. Okay. Then sin theta. Okay. N is given how much? 3. Lambda is how much? 680 nanometer. So I'll convert this into SI unit basically in meter. So it will be 10 to the power minus 9 meter. Okay. It means if you simplify this, sin theta will be how much? That will be 0.82. Okay. So angular position of third order maxima, that will be how much? Sin inverse 0.82. So it will be around 55 degree. So angular position for third order maxima, that will be how much? Sin inverse 0.8. Okay. ठीक है ना? Shekhar, is this clear? Sorodip, Dhiraj? Yes, sir. Okay. Shall I erase? Yes, sir. Yes, sir. Now just we have discussed that position of primary maxima, right? Now we'll discuss position of
primary minima. So similar to double slit diffraction, the cause of primary minima is basically what? Diffraction. So that primary minima arises due to the phenomena of diffraction. Okay. So at minima or for minima, I will be how much? 0, right? For minima, I will be how much? That will be 0. ठीक है. और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका ये है I नॉट sin square beta by beta square sin square n delta by 2 divided by sin square delta by 2. ठीक है. And I is becoming 0 because of what? Diffraction. So this term should be 0. For primary minima, this term should be 0, and this will give you this. So sin square beta by beta square, that should be 0 at primary minima. It means sin beta should be how much, Anju? Can you please tell me? At primary minima, sin beta should be what? It should be 0, right? Am I correct? क्या मैं ठीक लिखा हूँ? Yes, sir. Okay, now how much I will get that value of beta? So it means beta should be how much? 0 pi. It should be n pi. But n not equals to it, n should not be equals to 0. n 0 नहीं हो सकता क्यों? n cannot be 0, but n can take this value 1, 2, 3. n अगर 0 ले लोगे तो फिर बीटा इज बेसिकली हाउ मच? बीटा कितना होता है भाई? पाई बाय लैम्डा a sin theta. So if you take n equals to 0, then beta should be 0. And if beta is 0, then theta should be 0. And theta is 0 basically representing which point? कौन सा point represent कर रहा है? Central point, right? When theta is 0, this point is basically which point? This is central point. And central point is always what? It should be bright. Am I correct? Yes, sir. Okay, so n cannot take value 0. It can take value like 1, 2, 3 and so on. Okay, now I'll substitute that value of beta. Beta is how much? Pi by lambda a sin theta. Pi by lambda a sin theta. That should be how much? That should be n pi. So this pi will be cancelled. From here I'll get a sin theta. That should be how much? That should be n lambda. Okay. So please note that n cannot be 0 here. N can take which values? It can take 1, 2, 3 and so on. Okay. सर Yes. सर इसमें हम लिमिट मतलब बीटा टेंडिंग टू 0 ले ले तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा ना? हाँ, sin square beta by beta square. हाँ, that's why that's what I'm saying. That's why that n cannot be 0 here. अच्छा, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? अगर यहाँ पे नहीं सर, वो sin square beta by beta square का वैल्यू, हाँ, we take limit beta tending to 0 तो बीटा 1 0, आ जाएगा. देखो बीटा 0 तो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे. बीटा कितना है यहाँ पे एक्चुअली? बीटा इज लाइक पाई, then next will be 2 pi, 3 pi, that are allowed. Beta is 0 not allowed. That's what I was asking. Beta अगर 0 ले लोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? That point corresponds to theta equals to 0. And theta equals to 0, this point is basically what? Central point. Central point will always be bright. So when you will take beta is 0, then this term will be on. And this point is basically what? This is actually, it will give you maximum intensity. So you cannot take beta equals to 0 here because beta 0 is not allowed. Beta can take this value, pi, 2 pi, 3 pi and so on. For minima. Okay, so minima के लिए अगर other beta tends to pi, 2 pi, 3 pi इसमें चेक करोगे, obviously you will get this value I will be 0. अब चेक करना, ठीक है? Am I correct, Anju? Are you getting Yes what? sir. Okay sir. Beta is 0 is not allowed.
Okay. Okay. So you got that. Sorry, I forgot to tell. So you got a sin theta equals to कितना मिला आपको n lambda मिला. ये आपको डबल स्लिट में भी मिला था, राइट? इफ यू रिमेंबर, डबल स्लिट में भी यही मिला था आपको, राइट? Even you got this thing for single slit also, right? So from here I'll Yes, sir. get that angular position of nth primary minima or nth primary dark. That will be how much? Can you please tell me? N lambda y. Okay. Okay. Now we'll discuss that position of secondary minima. Position of secondary minima. And the cause of secondary minima is actually what? If you remember, for double slit we have discussed. The cause of secondary minima is basically what? Can you please tell me? Interference, right? Okay. So at again, at minima I will be how much? At minima I will be 0, and the cause of secondary minima is basically what? Interference, right? So अगर इंटरफेरेंस का आपको फॉर्मूला ध्यान है तो कौन सा पार्ट 0 होना चाहिए सेकेंडरी मिनिमा के लिए? बताओ शेखर, बताओ कौन सा पार्ट 0 होना चाहिए? sin square n delta by 2 divided by sin square delta by 2. These terms should be equals to 0, right? Again, for secondary minima, intensity should be 0, and cause of this intensity 0 is basically what? Interference. So the term in interference or intensity, the term interference term, that should be equals to 0. ये term आपको 0 होना चाहिए, है ना? So if this term is 0, can I write that sin n delta by 2, that should be equals to how much? धीरज बताओ कितना होना चाहिए? That should be equals to again 0. That should be equals to again 0. Now it means n delta by 2 कितना होना चाहिए? That should be equals to n pi. That should be equals to n pi. Okay. n का कौन कौन सा वैल्यू अलाउड है यहाँ पे बताओ? कैन n बी 0? स्मॉल n 0 हो सकता है? नो सर, वो सेंट्रल हो जाएगा. n स्मॉल n कैन नॉट बी 0 बिकॉज स्मॉल n अगर 0 हो गया तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? फिर आपका थीटा 0 हो जाएगा. सो दैट पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू central point. So n cannot take value 1. So it can take value like, sorry, it cannot take value 0. It can take value 1, 2, 3 and so on. Okay. Okay. Now it means delta should be how much? Delta should be twice n pi divided by capital N. And delta is basically how much? Delta का expression क्या है? Delta is nothing but twice pi by lambda d sine of theta. That should be equals to twice n pi divided by n. This 2 pi will be cancelled with this 2 pi. So from here you will get the value of sine theta or d sine theta. That will be how much? D sine theta will be how much? N lambda by capital N. N lambda by capital N. Now again, this n can take, small n can take which values? अंजू बताओ क्या क्या वैल्यू ले सकता है? बताओ. Sir, other than 0? It can take 1, 2, 3 up to n minus 1. But n नहीं ले सकता है. क्यों? अगर स्मॉल n आपका देखो कैपिटल n हो गया तो d sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर स्मॉल n का वैल्यू कैपिटल n हो गया सपोज मान लो, then how much you will get on that Lambda. right hand side? Lambda. And that is the condition of what? D sin theta equals to lambda. That is the condition of principal maxima. That is the condition of principal maxima. So that's why it cannot, n cannot take value like n. So it can take, a small n can take this value 1, 2, 3 up to n minus 1. But it cannot take this value because at
small n equals to capital N, you will get constructive interference or principal maxima. Okay, is this clear what I'm saying? क्या ये clear है? Yes, sir. Okay. Okay. इतना याद रहेगा आप लोगों को? You have to revise, right? Ramon, revise कर रहे हो? Yes, sir. Good. Is the time now? 36. Okay. Now we'll discuss one of the important part of your grading, that is basically what? Anyone? क्या है? Dispersive power. First of all, we'll discuss the dispersive power. Dispersive power. Okay. So again, suppose you have a grating. It has n number of slits. It has n number of slits, and you are performing diffraction experiment simultaneously by taking two light, and their wavelength is lambda and lambda plus delta lambda. दो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हो, दोनों का वेवलेंथ कितना है? एक का आपका लैम्डा है, दूसरे का lambda plus delta lambda, and you are using simultaneously you are using these two sources. Simultaneously you are using these two sources. Now suppose on the screen I'll show that intensity horizontally. Suppose on the screen what you are looking, for lambda you are getting maxima or principal maxima is like this. This corresponds to which light? Lambda. And for other sources you are getting the location of principal maxima is here. Okay. So this is the principal maxima for which source? Source having wavelength lambda plus delta lambda. And this is the location of principal maxima for which source? That source having wavelength of lambda. Okay. Now suppose the separation between these two principal maxima is, the angular separation between these two principal maxima is delta theta. ठीक है, कुछ नहीं, आपने दो सोर्सेस यूज किए हो, दोनों का वेवलेंथ अलग है ना? आपको स्क्रीन पे क्या मिल रहा है? डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, और ये मैं प्रिंसिपल मैक्सिमा का लोकेशन मैंने दिखाया हूँ कि दोनों का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो सेम पोजीशन में नहीं है, दे आर एट टू डिफरेंट पोजीशन एंड देयर एंगुलर सेपरेशन इज हाउ मच? डेल्टा थीटा. Then dispersive power is defined as delta theta by delta lambda. This is the definition of dispersive power. Okay. So how we'll calculate this dispersive power? How they are related to grating element, that we'll see. How this dispersive power is related to grating element. Okay. So these are basically what? These are basically your maxima or principal maxima, whatever it is. So these are the maxima. So for this I'll use the condition of maxima. So condition of maxima is what? D sin theta equals to what? N lambda. Okay. Since we are discussing about that maxima, so will you apply this formula? Okay. Now from this equation I can write D cosine theta into delta theta, that's because how much? N delta lambda. क्या मैं लिख सकता हूँ? अंजू देखो जरा. Can I write like this? Yes, sir. Okay. So from here I'll get the value of delta theta by delta lambda. That will be how much? N by small d into cosine of theta. And 1 by d क्या होता है basically आपका? So this is nothing but dispersive power. This is nothing but dispersive power of your grating.
So 1 by d is nothing but grating element np, and you have n divided by cosine of theta. Okay. So dispersive power is directly proportional to grating element. Okay. And this is how they are related to this related to theta also. And n is what here? n क्या है यहाँ पे? n क्या है धीरज? What is n here? It's a number, sir. N is order of principal maxima, right? Because here we have applied this formula. Why we have used this formula? Because we are dealing with what? Principal maxima, right? The location of two principal maxima is at not same place. The location of two principal maxima arising due to two different wavelengths, their location is not exactly at same. Their angular separation is how much? Delta theta. So how we will calculate that delta theta? Since we are dealing with principal maxima, so we have to use this formula. We have to use the condition of principal maxima. Now small differentiation will give this. So from here I'll get delta theta by delta lambda, that will be n by d into cosine theta. N is basically what? Order of principal maxima. Okay. N is order of principal maxima. NP number of places, sir. NP, if you remember, in place of NP is what here? In place of 1 by d, I have written NP. So NP is nothing but your grating element. Okay, NP is nothing but grating element. Okay, now second is your what? So this is your about your dispersive power. Now we have resolving power of grating also. Resolving power. Okay. So again, you have a two different source. You are using two different source having wavelengths lambda and delta lambda. So simultaneously you are using these two sources, and you have a grating having n number of slits, and on the screen you are getting diffraction pattern. Now suppose one of the source is giving principal maxima at this position. So this is the principal maxima corresponding to lambda. अब सपोज मान लो दूसरे के लिए जो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है इस लोकेशन इज दूसरे के लिए जो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है, और यू कैन से दूसरे का जो मिनिमा है, सेकेंडरी मिनिमा है, दैट इज लोकेटिंग एट द सेंटर ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट सोर्सेस. तो कब आपका ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा? कब आपका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा? सपोज मान लो ये जो आपका पीक मिला है, प्राइमरी मैक्सिमा मिला है, दैट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा है. दूसरे का जो ये जो पीक मिला है, दैट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. ठीक है. तो ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर तब अच्छा माना जाता है जब एक सोर्स का जो आपका सेकेंडरी मिनिमा है, एक सोर्स का आपका जब सेकेंडरी मिनिमा है, that is at the same place as the location of primary maxima of first sources. ठीक है ना. तो तब क्या करेगा ग्रेटिंग, ये दोनों जो आपका पीक है ना, इसको रिजॉल्व कर पाएगा. हम उसको दो पीक को अलग अलग से देख पाएंगे, है ना. तो रिजॉल्विंग पावर कोई ग्रेटिंग का अच्छा माना जाता है कब? जब एक का प्राइमरी, एक का आपका मिनिमा, एक सोर्स का आपका मिनिमा दूसरे सोर्स का मिनिमा का जो लोकेशन, एक सोर्स का मिनिमा का जो लोकेशन है, दैट विल बी सेम और दैट इज ओवरलैपिंग विथ द लोकेशन ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा ऑफ अदर सोर्सेस. तब क्या करेगा? तब हम उसको दो पीक को अलग करके देख पाएंगे, है ना. तब उसको क्या माना जाता है? दैट दिस ग्रेटिंग इज हैविंग गुड रिजॉल्विंग पावर. ठीक है ना. अगर इस तरह की होता है, सपोज मान लो ये वाला पीक और ये वाला पीक ओवरलैप हो गया, सपोज दिस बोथ पीक्स आर ओवरलैपिंग, देन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दिस पीक. हम इसको अलग से नहीं देख सकते हैं. तब क्या हम बोलेंगे कि इसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं है. जब दो पीक हम सेपरेटली देख पाएंगे दोनों सोर्स का, हैविंग वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, देन व्हाट वी विल से
this grating will have is having good resolving power. But for two different sources, if these two peaks are overlapping, then we cannot distinguish these two peaks. Then what we'll say? What we'll say that this grating is having low resolving power. So resolving power होने अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए? जो दो पीक है वो आपका सेपरेट होना चाहिए, और यू कैन से एक का मिनिमा दूसरे का मैक्सिमा के साथ मैच करना चाहिए, और दूसरे का मिनिमा जो आपका नेक्स्ट सोर्स है उसका मैक्सिमा के साथ मैच करना चाहिए, तब आप क्या करोगे? अलग से देख पाओगे। तो इसका जो आपका ये है, जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका रिजॉल्विंग पावर का? दैट इज बेसिकली डेल्टा लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा। लेट मी चेक। हाँ, लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा रिजॉल्विंग पावर, दैट इज बेसिकली लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा है। एंड दैट if you derive, I'm not deriving because this is not important part. So if you calculate, if you see the derivation, the resolving power will be depends upon order of principal maxima as well as number of slits exist in a grating. So this is the resolving power. So I'm not deriving this part, okay, but this is how they are related. So resolving power is nothing but lambda by delta lambda, that will be depends upon what? Number of slits, and this is the order. Small n is the order of principal maxima, and capital N is what? Number of slits. Okay. So grating का resolving power अच्छा होने के लिए आपका क्या है? Number of slits है और number of lines वो आपका ज़्यादा होना चाहिए. If n is high, then resolving power will be large. Okay. So in to understand that physics, how we'll explain this phenomena that grating is having high resolving power when the minima of on sources is matching with the maxima of other sources. Okay, and when the minima of these sources is matching with maxima of these sources, okay, then we can say that this grating is having high resolving power. And how we'll calculate that resolving power? Number, this is the order of primary maxima, and this is the number of slits. Okay, I'm not deriving this part, but this is how they are related. Okay, so let us solve few problems. Okay, then we'll stop. We have time. How much time is there? Okay, we can solve few problems. Okay, suppose you have a single slit Fraunhofer diffraction. So first problem, this problem asked in JAM, IIT-JAM. So you have a Fraunhofer single slit diffraction, okay, and slit width is given. Slit width is how much? 10 micrometer. Okay, and the light used for this diffraction that is given, wavelength of this light is 0.63 nanometer. Okay, so what they ask, that number of minima they ask, number of minima, number of primary minima, primary minima. You have to calculate that number of primary minima कितना है, और maximum number of minima, और maximum number of minima. ठीक है. अच्छा, आपको अगर एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा या मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए बोले तो कौन सा मिनिमा कैलकुलेट करोगे? यू हैव टू कैलकुलेट प्राइमरी मिनिमा, बिकॉज जो आपका सेकेंडरी मिनिमा है वो आपको अच्छे से दिखता नहीं है. सो इफ दे आस्क यू हाउ दैट नंबर ऑफ मिनिमा यू हैव टू कैलकुलेट, देन दे आर बेसिकली आस्किंग you have to calculate primary minima you have to calculate. Okay, so I will calculate that maximum number of minima. कैसे calculate करोगे? I will calculate this. So we know this formula for single slit. So these are the parameters given for single slit.
So you know for minima क्या condition है? Minima means basically you have to use primary minima condition. And if you remember for primary minima, it was the condition a sine theta that should be equals to n lambda. N is basically representing number of minima. So n, how it is related? It is nothing but a sine theta by lambda. A sine theta by lambda. Now you see a and lambda, that is constant. That is how much? 10 micrometer and 0.63 nanometer. So that maximum number, these are constant. So n will be maximum when sine theta will be maximum. When sine theta will be maximum, right? So maximum number of minima के लिए आपको n calculate करना है. N basically representing maximum number of minima. So it means n will be n max when sine theta will be on. Okay. So it means n max will be how much? That will be a by lambda. A is given 10 micrometer means 10 into 10 to the power minus 6 meter divided by lambda 0.63 nanometer. So it will be 10 to the power minus 9 meter. So if you calculate this value, you will get 15 point, around 15.8. Okay. Okay. So I can write 15 because option में जो दिया गया था given था वो आपका था 15 था. Then आपका 4, 12, 7. So correct option will be what? 15. Correct option will be what? 15. Okay. अच्छा अंजू शायद आप पूछ रही थी ना कि बी को क्या बोलते हैं, राइट? यू आर आस्किंग, राइट? What is B called? B is nothing but opaque space. B is nothing but opaque space. Okay. अच्छा एक में आपका ये था, सबसे ये ग्रेडिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में आया था. इसमें क्या था आपका? इसमें डी डिफाइन था, स्लिट सेपरेशन, बट इसको डी को ये भी बोलते हैं, डी को आपका ग्रेटिंग एलिमेंट भी बोलते हैं. डी को क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग भी बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट भी बोलते हैं, है ना? तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू ग्रेटिंग. So grading का जो grading element that was defined in the question, that was A plus B. That सर was, yes. सर ग्रेटिंग एलिमेंट 1/d होता है. मतलब ग्रेटिंग एलिमेंट आपने बोला. sorry, ये आपका grading constant बोले थे, grading constant. Good, very good. ये आपका grading constant बोले थे, grading constant. ठीक है, एक नेम जस्ट डिफाइन किया है. The grading constant they have defined like A plus B. Okay, and grading element that you are correct, Anju, you are correct. That is 1/d. So grading constant that is given A plus B. Okay, and they have told that fourth order was missing in the diffraction pattern. Fourth order peak was missing. ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? बी बाई ए कैलकुलेट करनी है, कितना है? फोर्थ ऑर्डर पीक वाज मिसिंग. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत सिंपल है ये. राजकुमार बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? सो यू नो दिस फॉर्मूला, राइट? डी बाई ए दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? एन बाई एम. दैट वी नो, राइट? डी बाई ए for order missing, this is the formula, whether it is for grating or it is true for double slit also. So they told you that fourth order is missing, so in place of n I'll use 4 and m will be how much? That will be 1. And they have given d is given as b plus a divided by a, that should be equals to how much? 4. So if you calculate it, you'll get b by a, that should be equals to how much?
4 minus 1, that will be 3. That will be how much? 3. Very simple. Now let us solve a good question that asked in TIFR, but we have time already. Time is finished. Okay, let us finish here. We'll solve few more problems on grading. Okay, then we'll go to that ray optics. So if you have a question, you can ask me. Otherwise, I'll stop here. Okay, then I am leaving here. Okay. सर हम्म, सर इंटरफेरेंस से क्वेश्चन था सर, जैसे एक डार्क फ्रिंज है सर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज है और थर्ड ऑर्डर ब्राइट, तो सर इसका फार्मूला कैसे, मतलब डिस्टेंस निकलेगा सर दोनों के बीच का? कौन सा? सर एक फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है सर और थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला सर। अच्छा, फर्स्ट ब्राइट और थर्ड डार्क यस सर। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। सर ओके, तो आप बताओ डार्क के लिए क्या फॉर्मूला था आपका? 2n minus on d lambda by d, right? Twice d. This is the formula. ये आपका किसका है? पोजीशन ऑफ nth डार्क, है ना? और nth डार्क का है, और दिस इज द nth ब्राइट का ये क्या है? n d lambda by d है। थर्ड के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, राइट? थर्ड डार्क का बोले ना? यस तो यार ये आपको सब्स्टिट्यूट व्हाट? 3। और कौन सा ब्राइट बोले? नंबर ऑफ ब्राइट फर्स्ट। यहाँ पे ऑन सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको कैलकुलेट करनी है 3d minus y on d। ओके सर, ओके वेरी सिंपल। ओके ओके, आई एम लिविंग हियर। ओके Okay. Thank you, sir.